A very good morning to all of you present here. I am today's host Prabodhi Veskade, MA English first year, Gondwana University, Gadchiroli. First of all, I would like to welcome today's chief guest and speaker, Dr. Priya Gidam ma'am, Assistant Professor of PGTT Commerce, Gondwana University, Gadchiroli. Today, next I would like to welcome Dr. Joshi sir, HOD of PGTT English, Gondwana University, Gadchiroli. And I would like to welcome today's all the faculty members and participants. This is the third edition of Know It series and sixth session, which is organized by faculty members of PGTT English, Gondwana University, Gadchiroli. The purpose of this series is to explore the teaching student fraternity with the latest development and career prospects in the field of English language and literature. The series invites various speakers for the deliberation. Today's our chief guest is Priya Geda ma'am, Assistant Professor of Commerce, Gondwana University, Gadchiroli. So welcome to this series, ma'am. Now I hand over this session to Priya Geda ma'am. Thank you so much, Prabodhini. And this is my literally, I'm very glad the Department of English giving me opportunity to interact with your students. So thank you, Joshi sir, and thank you, Vaibhav sir, for that. My topic of today's lecture is academic writing. Uh, as you all know, writing, when the term is writing is what? Expressions. It is the expressions of your thoughts. When you are going to write something, that means you are be able to think some words. But it's very different to writing a academic way, because as Prabodhi said that you are all related to the English language or English literature. So there might be some style of writing. In poetry styling, some drama styling, or some different kind of styling. But academic style is not restricted to the English only or the literature only. It is a wider term. It is related to the commerce faculty also. It is related to the science, humanities, and different technology faculty also. When we term as a writing or academic writing, it means you are writing on the words of the other and you're giving the opinion of the other. You cannot giving your opinion on the topic of academic writing. This is the simple brief knowledge of academic writing. We far away for the academic writing. Before that, just simplify the meaning of academic writing. After the session, we're going to came out with conclusion. What is the outcomes of this session will be the understanding what is academic writing, to know how to use the appropriate academic style. That is very important for you, because you have to write. You are always writing some and other things. But what is the academic writing and how the style you should be maintained for that? It is very important for you. And then the type of academic writing. This is very narrow, very short. Basically, I am taking very short or narrow thing, because academic writing is a very vast terminology. Because there is a number of points, number of items is there. You should be look at after. But we have a restricted time. We already have a 45 minutes, because Vaibhav sir told me don't far for the 45 minutes. So we have a 45 minute only. So on that 45 minutes, we have to understand the basic understanding of basic meaning of academic writing, even the appropriate style of academic writing, and the types of academic writing which you should be accepted. Okay, I hope you understand the things. We should move forward, and then now we are started with academic writing. Whenever think about academic writing, you always think academic means is like some professional, some kind of very burdenistic work. It is I can say that we can always far away for this academic है तो यार बहुत ज़्यादा बहुत pressurized word है. No, it is not a very pressurized word. It is not a very professional word. It is not somewhere else just did you thinking. It is simple as a formal style. Whenever think as academic, it means a formal. आपको just formally आपके words को confirm करना, because देखो writing is what? Writing is a communication medium. When you write something, you express your thought
in your paper, that means you are writing in a paper for to whom? To the others, to your audience. If your audience accept your writing, then it is completed. But if your audience or your reader cannot understand your words, cannot able to understand your style of writing, it will be difficult for you to difficult for you also. आओ ए सॉरी एक मिनट दिख रहा है ना मैं बात कर रही थोड़ा बाद में आओ sorry for that some students are there okay so I thought ki whenever we think that ki communication is there there should be a writing of knowledge ki your writing spell should be understand to the readers. Similarly, that understanding it in a very formal way, it is academic writing. It is used on the university and the scholar publications, even though in the reports, labs, journals, articles, book, because there is a words of writing in the books or maybe a journal or in the topic of any other academic. It should be understand to the other. We can also say that in academic writing, because academic writing is based on some kind of analysis, some kind of evidence. When evidence arises, automatically it gives you a consideration of yours authors. It is not yours. It is not your opinion to say that. You are giving the opinion of the others. Others said, and this is the things we have to show. As you are the PG student, you all know about the research. What is research? That read and search. Then you are going to be researching something in your work. When researchers arrive, automatically there is academic writing. Because in a research, you are searching something with the reference to the others author's book, maybe a publications, maybe a journal or somewhere else. They should very clear, your mind should be very clear ki your academic writing always backed by your evidence. It cannot be if your opinion, it is not your opinion at all. Because whenever we say that a literature student or the term of literature, it is a way of expressions. बिकॉज आप लोग सब लिटरेचर्स के लोग हैं, जोशी सर, वैभव सर और आपके डिपार्टमेंट के सारे लोग लिटरेचर्स के लोग हैं. तो जब भी लिखना होता है तो हम अपने दिमाग के अलग अलग नहीं कि देयर इज एक्सप्रेशंस or maybe the waves or different kind of words are used. The proverbs, the nouns are used for the for किसी और के लिए. But at that time we said that academic writing there is no such space of that imagination, that creativity. It is a critical, it is not a creativity. क्योंकि क्रिएटिविटी होगी तो यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग फिनिश हो जाएगा. इट इज नॉट योर क्रिएटिविटी. फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O सभी साइंस जानते हैं, तो अगर मैं H2O को कंबाइन कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो पानी ही बनने वाला है. तो इट इज अ टर्मोलॉजी, इट इज अ साइंटिफिक, इट इज प्रूफ दैट. So automatically, whenever you write something, it should be have some kind of evidence or maybe a tested something. Always academic writing back the evidence. जो मैंने आपको already बताया है. It is also supported by the evidence also or the references also. You should mention the references. हम हमेशा जब रिसर्च के लिखते हैं, जब रिसर्च ले जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रिसर्च के लोग हैं जो रिसर्च की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, डिसर्टेशंस में और एनीथिंग, इवन दो एसेज आप जब लिखते हो तो ऑटोमेटिकली हम जब कुछ एक्सप्रेस करते हैं कोई चीज़ों को या किसी की चीज़ को लेकर, तो हम उनके नाम का एक रेफरेंसेस देते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एकेडमिक राइटिंग. वी कैन नॉट से दैट कि क्या है, ये क्या हुआ है. भी हम बोलते हैं कि हम किसी और के साथ में कि हमने वो रीड किया है. वी रेड दैट the particular author says that according to the particular author, according to the author says, तो हम वैसा मेंशन करते हैं. तो ये आपका टर्मिनोलॉजी आपके एकेडमिक राइटिंग में हो. तो ये हमेशा याद रखिए कि एकेडमिक राइटिंग हमेशा एक एविडेंस बेस्ड होती है और ये आर्गुमेंट बेस्ड होती है. जैसे व्हाट, अब सिंपली बोलेंगे एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ एकेडमिक राइटिंग. तो द एम ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट, कि आप आर्गुमेंट करें. आर्गुमेंट ऐसे ही क्या, मैंने आपसे आर्गुमेंट शुरू कर दिया विदाउट एनी रीजन और विदाउट नो,
There is the reason also, there should be the evident also. अगर मैंने कहा H2O बनता है, H2O मिला के पानी बनता है, the water is combined with a mixture of H or 2. तो H2O जो होता है वो combine करने के बाद there is the evident. So what, whenever you are argue something, it should be supported by some of the research activity, some of the research evidence, or there may be a reference evidence for that. There is a no perceptions. There is a no place for perceptions of the writers. I told you, as you are the literature student, the your perception may be a different. But as academic writing, there is a no perception. There is a no place for perceptions, ideas, imaginations, and creativity. Creativity in the terms of academic only, which is referred by somewhere as something, but is not in that zone of academic writing. So, मैंने जैसे आपको अभी तक बताया है the fact, जो मैंने आपको लिखा है कि what is, it is based on the fact and the data mentioned जो मैंने अभी किया है. Then and sound format, the formal, basically आप जो भी बोलने वाले should be very formal. It should not be beyond the formal. For example, when we are entering the classroom, what we do? We are taking a permission of the teacher. Ki, ma'am, may I come in the class or not? Not, but may I come in the class? The teacher give a permission. Yes, come to the. This is a very formal way of reactions or formal way of action in the classroom. But ऐसा होता है कि आप उठाया और बैग उठा के क्लासरूम में आ गए without taking a permission of the teacher? No. As we say that academic writing is simply as a permission of your author. You cannot allow of yourself to giving anything without your mind. No. If you're writing something, you have take a permission, you have take a evidence, you have take the different kind of references for writing the academic way. अब what does academic writing look like? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है अपना क्लासरूम का. सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है. ये एग्जांपल मेंशन है एक फ्रेंडशिप्स को लेके, एक कॉलेज को लेके. अकॉर्डिंग टू बुटे, द स्टूडेंट्स ऑफ डेवलप, मतलब एक आई एम गिविंग, इसको मैं सिंपल से एक इलैबोरेट करके छोटा सा एक बना बोल देती हूँ आपको कि आपके, अगर आप कंसीडर कर लेते हैं कि आपके क्लासरूम्स और आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके कॉलेज में कुछ स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट है, उसमें 75% ऐसे जो ऑन कैंपस भी आपके फ्रेंड्स होते हैं और ऑफ कैंपस भी आपके फ्रेंड कंसीडर किया जाता है. यानी आप उनको हमेशा अपने एक फ्रेंड में कंसीडर किया जाता है, और वो फ्रेंड आपके एकेडमिक राइटिंग का, वो इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि वो ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी कंसीडर होता है. इट्स बेक्ड बाय द रिसर्चर कि ये होगा, तो आप क्या करोगे, इस तरह से कोड करोगे अकॉर्डिंग टू बूटे. यानी ये इन्होंने ऑलरेडी एक कोड किया है और इसके हिसाब से ये उन्होंने एक स्टेटमेंट फॉर्म किया है. ये स्टेटमेंट आप आपके रिसर्च के लिए काम पे ला रहे हो. उन्होंने रिसर्च किया, according to Bute say that कि students have on-campus friendship according to his research. So that if you want to quote that Bute research, so you have to quote कि this kind of activity had been appeared or had been concluded by Bute. So this kind of fact should available in your academic writing. Okay. Then type of academic writing. What is the type of academic writing? As there is a different styling in academic writing. There is no simple word ki kaise hoga, because every person having the different kind of styling to write. So in the writing of when we think about to write academic, so academic mostly write text indeed for the publication, such as the journals, reports, book, chapters in edited collections. Okay. For the student, the most common type of academic writing is assignment. They're very important for you because every teacher is giving you assignment. What you write whole paper, two paper, three paper according to the question of your given by your teachers, and writing particularly with the introduction, and then what is the main body of your assignment, and then give a conclusion. This kind of things you did. So this there is also one of there is also different styling of writing academically. These I just specify this kind of styling which are mentioned or which are the type of the academic writing. Simply as an essay, we can say that essay, research paper, dissertation or thesis, research proposal, literature,
a review literature, the lab report, and bibliography. Essay as the student of literature, do you have do you think that कि essay लिखना बहुत difficult काम है? नहीं, अब डेफिनेटली नहीं, ऐसा आप सोच भी रहोगे नहीं, ऐसे क्या, वी आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो हमारे लिए अगर मैम ने एक वर्ड कहा तो वी कैन इलैबोरेट 2, 3, 4 पेजेस, यस, but when we're writing essay, it should be very fair, short, sweet, and sweet because it should be understand because we are writing to whom? To the readers. If your reader don't understand, you think your whole work is like a garbage, like a kachra only. Because no one understand your words, no one understand your language, what you are writing. It is very important in the essay writing also. Your the writing should be understand your by the instructor. Okay, and then research paper. अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो PhD के लिए सोचते होंगे, they want to become assistant professor, they want to complete their PhD, they want to pursue their PhD. In some of the people also, कि they are a PhD holder, PhD pursuing for the PhD also. So your aim is to write a research paper. So what do you think being difficult to writing a research paper? Very importantly is a knowledge, investigation. I would say that is a more in-depth investigation based independent research. Why should I say that independent research? Because you are doing the research, there is no such person involved with you. You or maybe some other two people jointly, collaboratively complete the work. But very importantly, it should be an in-depth investigation. There is an investigation means there is evidence, there is a references. The next is thesis. Thesis and dissertation. All knows about the thesis and dissertation when you're writing a research paper. To whom you're writing a research paper, might be you have to complete your PhD thesis, might be you have to complete your PG courses for submitting a dissertation. So dissertation is like a book also, but it is a review. It is a book of some kind of investigation or the analysis part. You have to take some kind of topic, है ना? Because you have to choose a topic also. When you haven't chosen the topic, you started investigating the topic, you started taking referred to somewhere, or after completion this, the referring, the collecting, analyzing, and then you take a conclusions part. Okay, whether what topic you have been decided according to your objective in the hypothesis, this conclusion have been made. So this kind of a simpler format you have to write in your dissertation. And then research proposal. Very everyone very like whenever I ask about to the student, did you have complete your proposal for your PhD or the synopsis? We can also say that a synopsis. So the mind would be very their mind would be very like a question mark. I'm asking why it is question mark. What do you happen? What basically what are the things they don't know about? So मेरा एक ये चीज मानना है कि जब हम प्रपोजल्स की बात करते हैं, इवन दो रिसर्च प्रपोजल, तो सब लोग को बहुत ही ज्यादा उसको स्पेसिफाइज करना शुरू कर जाता है, स्पेसिफाइज नहीं एनालाइज करना शुरू कर जाते हैं कि रिसर्च का है, कैसे होगा, क्या होगा. नो, आपको क्या करना है, डू यू हैव टू सिलेक्ट योर very much or you're interested or your potential topic. When you decide a topic, according to the topic, you have to make a plan of your future dissertation. Proposal is what? It is your future activity. A research proposal, what you are performing in the future, it is. Hello. No issue, madam. Hello. Might be some. Okay, fine. So when we say that the research proposal, the proposal always having that ideas and the plan of your future dissertation or a research product or maybe a thesis of your research PhD. So always think that whenever you select a research proposal and you have to whether you will writing a research proposal, it should be a plan activity. There is a word because ये सभी चीजों में एक बात कॉमन है कि आप जो वर्ड यूज करने वाले हो वो कैसे रहेगी. व्हेन यू टेकिंग अ प्रपोजल, इट इज ऑलवेज द फ्यूचर स्टेट. तो आपका जो प्लानिंग होगा, देयर वर्ड्स आर यूज्ड, दैट वर्ब्स आर यूज्ड, द नाउन्स आर, इट शुड बी अ फ्यूचर टेंस, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए बना रहे हो. देयर इज नो पास्ट टेंस.
बट इन द व्हेन सिमिलरली जब हम थीसिस की बात करते हैं, डिसर्टेशन की बात करते हैं, तो डिसर्टेशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्टिविटी, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग समथिंग you already had performed. After performing, you are giving the conclusions. So there, the action would be always a past tense, and your conclusion will be past present tense. Because अभी वो क्या होगा उसके लिए. तो it is very clear for you कि कौन सा tenses हमें use करना चाहिए आपके कौन से वाले styling में. Dissertation style में क्या use होना चाहिए, proposal के style में क्या use होना चाहिए, even research paper, when you take a research paper investigation क्या होना चाहिए, when you take a essay, तो किस तरह के nouns और pronouns, even the verbs आपको use करने हैं. Then literature review, ये लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर्स में बहुत लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि ये होता क्या है. सबसे पहली बात तो आई गिविंग यू सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट कि आप व्हेनेवर यू थिंक कि यू वांट टू गोइंग फॉर सम रिसर्च और मे बी you are a PhD student or you are selecting some topic, because I'm belongs to commerce department or the commerce fraternity, so I have been choosing the topic of my uh, very favorite topic is marketing. So if I'm choosing topic of marketing, so if I'm going to write the review literature, that means कि I am going to write the marketing based research activity in the past, or on the basis of that review literature have been mentioned on my proposal that कि why I'm choosing that topic. Because review literature क्यों लिया जाता है, तो वो लिया जाता है कि आपने आपके पास्ट में जो लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने सिलेक्ट किया है वो टॉपिक आपने हुआ है या नहीं, और क्यों आपने ये टॉपिक आपका रिसर्च का टॉपिक लिया है, बिकॉज ऑफ देयर इज अ सर्टेन गैप बिटवीन द टॉपिक सिलेक्टिंग द टॉपिक एंड द रिव्यू लिटरेचर, एंड we are combining or we are finding the gap and we are having a solution to resolve that gap, and we are selecting the proposal topic. Each and every style is connected with each other, but this writing or writing in styling is different. Review literature is always based on some of the researcher, is existing researcher, a critical analysis of the existing researcher on a particular topic. It is not related to one topic, it may be a different topic. One topic may be a different author also. This is an order of approaches. It's always back to the order of approaches to inform the approach to a new piece of research, because it is the review is motivated you, giving you a line to give a new research. And the last, no, not last, second last is bibliography, and then after last one is lab report. What is bibliography? सभी को ऑलमोस्ट पता है, जो ऑलमोस्ट जिसने डिसीजन लिखा होगा, एसेस लिखते हैं जो, इवन दो दे हैव बीन राइटिंग द रिसर्च पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर बिब्लियोग्राफी. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और द राइटिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी इज अ वेरी डिफरेंट जोन. इन सबको आप छोड़ दीजिए, ये सारा चीज आप जब स्टाइलिंग देते हो, वो सारी स्टाइलिंग इज अ डिफरेंट सेक्टर एंड द बिब्लियोग्राफी इज अ डिफरेंट सेक्टर. अलग अलग स्टाइल में बिब्लियोग्राफी होती है, कोई एमएल स्टाइल में करता है, कोई पेज स्टाइल में करता है, और बहुत सारी स्टाइलिंग होती है बिब्लियोग्राफी. बट बिब्लियोग्राफी इज व्हाट, और उस स्टाइलिंग में आप क्या रिफर करते हो. तो दिस स्टाइल इज रिफर टू द सोर्सेस ऑफ रेफरेंसेस यू आर शॉर्ट डिस्क्राइब. अब ये डिस्क्राइब करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जो मैंने कहा स्टाइलिंग कि आपने तो बना दिया कि वाइल performing the research activity I have been read 5 or 10 or 20 books. Okay, fine. So how can you analyze the 20 books? You should mention there according to the author of the book, according to the publication of the book, according to that topic of the book, according to the page number. So you have to mention all the records of that, uh, uh, references you have been taken from the books or from the research papers or from the different kind of newspaper, maybe some kind of web related places, wherever. But it should be mentioned that short and brief introduction or maybe description of their resources. It might be in different forms, it's okay. But there should be a list. There should be paragraph. यहाँ पे कोई paragraph नहीं होगा कि we have searching, we have read 10 book or 20 book in the per book ऐसा. No paragraphing is mentioned in there. No, not at all. There is a listing of a book. 1, 2, 3, 4, maybe a column or a page, कुछ भी. ठीक है, तो these are the styling available for research writing or academic research writing. Then
Now we have a key tenet for academic writing. As you know कि अभी हमने इतनी बारी बात कर ली कि एकेडमिक राइटिंग क्या है, तो हमने बोला कि आर्ग्यू करना है, एविडेंट होना चाहिए, वो कंसिडरेशन फुल होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन प्रिसाइप्शन नहीं होना चाहिए, उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि शुड बी वेरी फॉर्मल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ हमने की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अब वेन एवर यू राइटिंग, मैंने आपको भी बोला कम्युनिकेशन, वी हैव अ कम्युनिकेशन, why we are going to write, we have to write for who, to your audience, to your readers, and the readers should convince your writing, they should accept your writing, or when they accept, when it should be have a reasonable arguments with the evidence. As simple as a formal, it should be very formal, very precise, ठीक है, but the main aim is to be convey convey your communication to your readers, to your audience. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मैं अभी आपको बता चुकी, बिकॉज मैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो मेरे एग्जाम्पल जो भी कॉमर्स वाले होते हैं, आई एम नॉट रिलेटेड टू दी ह्यूमैनिटीज़ वाले एग्जाम्पल। मैं कन्विंस कैसे करूँगी, बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग फील्ड में हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इज कि योर ऑडियंस इज कन्वे टू कन्वे और एक्सेप्ट योर एडवर्टाइजमेंट, बाय विच वे, बाय एक्सेप्टिंग और बाय परचेसिंग द प्रोडक्ट। जब आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका मेरे कंज्यूमर ने खरीद लिया, दैट मीन कि वॉट एवर आई कम्युनिकेट टू देम, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज कन्वे टू दी पीपल, बिकॉज मैंने वो स्पिरिट आगे किया है। देखो, लेकिन यहाँ पे विजुअलाइज है चीजें, पर बिफोर विजुअलाइज शुड बी रिटन ऑन द सम पेपर, विजुअलाइज इन द पेपर। आपने अगर, क्योंकि वो थोड़ा सा इमेजिनेशन में होता है, एडवर्टाइजिंग बेस्ड होता है इसीलिए, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। लेकिन हम जब एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, तो अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है कि ये चीज़ यूज होने के बाद, ये कुछ एविडेंट के बाद में आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, तो कन्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेन एम ऑफ योर रिसर्च एकेडमिक राइटिंग और द रिसर्च राइटिंग। अगर आपका कन्वे नहीं हो पाएगा, आपका आइडिया रिफर नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ें पूरी की पूरी नॉट कंसिडर की जाएगी। देन सेकंड वन इज, अभी इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड, मैं आपको जैसे बताई कि एक्सप्रेशंस अवॉइड होने चाहिए, पहले ही बता चुकी है आपको मैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर योर एक्सप्रेशंस, इमोशंस, कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है, दैट मीन डजंट मीन कि आज पानी नहीं बनेगा, हैज टू ऑलवेज बिकम अ वाटर ओनली, इट इज मिक्स्ड, इट इज अ वाटर। तो आप बोलोगे कि नो मैम, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज पानी नहीं बनेगा, आज कुछ और बनेगा, तो देयर इज नो सच ऑप्शन फॉर दैट, ओके। देन अवॉइड considerations such as don't, can't, isn't it, because these are the explanatory things, ये यहाँ पे यूज नहीं होने वाले। रिप्लेस देम इन टू वर्ड कन्वर्सेशन ऑफ योर कंट्रैक्शंस, उनकी जगह पे कोई और वर्ड यूज कीजिए, तो वो ज्यादा कन्विंस लगेंगे और ज्यादा कन्वीनियंट लगेंगे रीडर्स के लिए। यहाँ पे अवॉइड द थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, डोंट गिव द थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, टेक काम, टेक कि आप क्या कर रहे हो, गिव इन देम अ रिलैक्समेंट, कि आप जैसे बोलते हो ना, क्यों करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, इज अ क्वेश्चन मार्क, डोंट गिव दैट थिंग्स, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ क्वेश्चन मार्क, तो योर एविडेंट इज व्हाट इज द हेल्प ऑफ योर एविडेंट, what is meaning of your evidence you have been collected, what is your investigation, because you are asking to the reader only. No, you are in position to writing something on having the differences, so there is no place of no place for the historical or the theoretical statement, no. Next is accuracy, is very important of your academic writing, कि it should be very accurate. मैंने आपको पहले ही बताया, देयर इज नो प्लेस फॉर इमेजिनेशन, देयर इज नो प्लेस फॉर एक्सप्रेशन, कि आपका मूड नहीं है, आपका दिन नहीं है, आपके साथ लोग नहीं है, आपके साथ ये नहीं है, देयर इज एक्सक्यूजेस, नो, देयर शुड always accuracy. Once it is appear for the academic writing, it should be definitely accurate. Accuracy होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब एक्यूरेसी बोलते हैं, दैट मीन कि आपने कुछ चीज एक्यूरेसी के लिए आपको अपने उसको कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, आपने कुछ टेस्टाइज किए है, तो टेस्टिमोनी यूज की हुई है बाय उस राइटिंग को लेके, और जब तक वो राइटिंग टेस्टिमोनी से प्रूव्ड हो जाती है, तभी वो एक्यूरेसी पे डिफाइन की जाती है। तो आपने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया है, तभी आप उसको लिख रहे हो, ठीक है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्यूरेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग किया जाता है. देन हेडिंग, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग ऑफ योर एकेडमिक राइटिंग, जो हमेशा हम लोग भूल जाते हैं. क्योंकि मैंने अब तक बताया कि आपका आर्गुमेंट कन्विंस होना चाहिए, मैंने कहा कि आपका आर्गुमेंट एक्यू होना चाहिए. हेडिंग इज व्हाट, क्या होना चाहिए. तो आप वॉट एवर यू थिंक, it should not be upon your opinion, it should not be based on your opinion. Hedging is an action that can be used to reduce the risks of making claim. मेरा claim नहीं है, it is not my opinion, it is the opinion of the others जिसके थ्रू मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है. तो हेडिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे रिसर्च राइटिंग का, कि आप जब एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पावर होता है, पावर ऑफ नॉलेज, द पावर ऑफ योर बैक और योर डिस्क्राइब्ड योर नॉलेज, कि आपने ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ के रखा है कुछ चीज़ों के बारे में. यू हैव अ नॉलेज, यू हैव इन्वेस्टिगेशन, यू हैव एविडेंस, और वो एविडेंस के हिसाब से आप मेंशन कर रहे हो. यू कैन नॉट से दैट इट इज माय ओपिनियन और माय things. No, it is think by the other, on the basis of the thing I can say that. हम जब ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो फॉर द वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं कि आज लगता है पानी आएगा, तो आपने बोला तो वेदर फोरकास्टिंग हो जाएगी क्या. या हम जब न्यूज़ पे देखते हैं कि आज वेदर आज बारिश होने वाली है, तो वी सिंपली बिलीव दैट. व्हाई वी गोइंग टू बिलीव दैट. और अगर मैंने बोला पानी आने वाला है, तो आप बिलीव करोगे क्या. नहीं. बिकॉज एक जब न्यूज़ चैनल बोलता है तो वो किसी प्रकार का एविडेंट होता है, उनके पास में कुछ फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग के लोग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको पैरामीटर्स को जज करने के बाद में. आफ्टर दैट वी गोइंग टू डिक्लेयर दैट कि यस टुडे इज लाइक वेदर इज क्लाउडी, वेदर इज रेनी, वेदर इज लाइक हॉट, these kinds of statement. But the statement, when we taking that this kind of statement, it is not as an opinion, it is a statement, it is a statement of yours by the others investigations, or which are you read that. सबसे लास्ट लाइन में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा है हैविंग सेड दैट मेनी एकेडमिक राइटर फील कंपेल्ड टू यूज दैट इज कॉल्ड हेडिंग टेक्निक व्हेन राइटिंग देयर एकेडमिक पेपर. उन्हें लगता है कि दिस मे बी, दे फील दैट कंपेल करने के लिए, बट देयर इज नो सच थिंग. यू हैव टू कंफर्म दैट. विदाउट कंफर्मेशन यू कैन नॉट राइट एनीथिंग. Or they are used to avoid answering a question, making a clear direct statement, committing yourself to particular action. No, no, no. Okay, moving forward. सबसे important objective, as I said, that कि there must be some objective for your viewer or your audience or your readers who convey or accept your writing. Because it is a impersonal, it is not a personal. मुझे आज ये लग रहा है, मैं ऐसे चाहिए. No, this is not your भैया, आपको आपका नहीं बताना है. What you want to do, you are investigate the things, you are collect the information, you are you are doing the investigation, collecting the information, doing the collecting the evidence also, and then you take a statement, then you frame a statement. बिना कुछ सोचे समझे अपना statement नहीं दे सकते आप. Writing is not like that. Academic writing is the impersonal writing. It is not related to someone else. It is not related to you also if you are a writer. If you are a researcher, if you are a writer, you cannot say that कि आज मेरा मूड ठीक नहीं तो आज पेज खराब लिखेगी. No, because you are writing, you are a responsible person writing this. Or if you are writing, your writing material will be read by the other people also. You must think for that. It does your writing does not affect to any other person's views. Importantly. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इम्पर्सनल नहीं है. तो इम्पर्सनल, और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यूज फॉर इंग्लिश के लिए यूजिंग अ नाउन्स मोर देन अ वर्ब. डोंट यूज अ वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है ना, वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्टिव में बेस्ड है, ये पूरा का पूरा टेलेंट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है. तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा तो कि आपको पहले डिफाइन करने पड़ेंगे व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव यू आर क्लियरिफाई योर थिंग्स. ओके. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी 2-3 सेंटेंस बोला भी था कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी
to make clear that ki what are your investigating in your research activity or your writing on the basis of that research activity is very sensible, because your audience should accept that, should convince that yes, the person who belongs to that particular book is a academic writer, or there might be some kind of research on writing that paper or the book, or maybe a sub report or journal. ठीक है, so it is a responsibility of the academic writer कि whatever he or she write, it should be based on some standard, conventional, must be followed by the investigation. Okay. And then one more, then the type of writing में ये वैसे हमारा समय तो हो चुका है, still I have वैभव सर मेरे पास 10 मिनट रहेगा तो मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ. Can you give me a 10 minute more? ठीक है मैडम, कंक्लूड कीजिए. ओके, यस, बस 10 मिनट्स में. ये आप सबके लिए वेरी कॉमन चीज़ है. आप हमेशा बोलते हो, रिसर्च में बहुत बार आता है. तो जो पीएचडी कर रहे होगे या रेजिडेशन बना रहे होगे, जो सोच रहे होगे कि मुझे कुछ एक्टिविटी या रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है या रिसर्च पेपर लिखना है, तो ये जो टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी टाइम वी गोइंग टू राइट, हमारा एक रिसर्च मेथोलॉजी का एक ऑप्शन होता है जहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है कि आप किस तरह का रिसर्च राइटिंग करने वाले. तो हम लिखते हैं कि प्राइमरी डेटा पे हम ना बेस्ड है, सेकंड डेटा पे बेस्ड है, या बहुत से डेटास पे हम लोग जो काम करते हैं उन दोनों के हिसाब से. तो ये जो फॉर्म्स होते हैं, बता रही हूँ मैं आपको, वो फॉर्म्स होते हैं राइटिंग्स के, जो लिटरेचर्स पे भी यूज होते हैं और ह्यूमैनिटीज पे भी यूज होते हैं, इवन तो हम कॉमर्स मैनेजमेंट में भी यूज होते हैं. हाँ, इट माइट बी कि सम साइंस टेक्नोलॉजी वाले इसे यूज ना करें, लेकिन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज के लोग नॉर्मली यूज करते हैं. दैट इज फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव, कि you are writing your paper on the descriptive way, on basically the secondary data collection on the basis of secondary data. सभी को डेटा कलेक्शन, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करती हूँ मैं, तो देयर मस्ट बी अ टू टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो डिस्क्रिप्टिव वर्ब जो यूज होता है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी, इट इज नॉट बेस्ड बाय द प्राइमरी डेटा. On the basis of this type of, the writer or the scholar or the researcher, राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब पूरा का पूरा थ्योरेटिकली वे में लिखा हुआ, पूरा का नैरेटिव वे में लिखा हुआ, डिस्क्रिप्टिव वे, एक्सप्लेनेटरी वे में लिखा हुआ है. वी कैन ऑल्सो राइट हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करके लिखा है. और द एम, मैं एम बोल सकती हूँ उसका, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एम क्या है, तो प्रेजेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को बताना. व्हाट इज द प्रेजेंट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल in different forms of medium, because writing is also a medium. Now I told you that writing is a medium of communication. So whatever you are writing it's a part of your communication to the others. The descriptive form of writing is very important while writing the research paper or the thesis or the dissertation. सो मीन कि आप अगर डिस्क्रिप्टिव ले रहे हो, तो इट मीन कि आप कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट फैक्ट को इन्फॉर्म कर रहे हो. इट इज एम टू रिवेल और एम टू प्रेजेंट योर प्रेजेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन टू योर यूजर्स. ओके, सेकेंड वन इज एनालिटिकल. देखो, मैंने डे वन को, हम जब से शुरू किए तब से एक चीज कॉमनली बोली है कि एकेडमिक राइटिंग इज व्हाट इट इज बेसिकली it is based on some evidence. When you are writing something, it is based on some kind of evidence. तो एविडेंट कब निकलेगा, एविडेंट कब आएगा, कब आप उसको एक सपोर्टिंग एविडेंट लोगे, या कब उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, ये कैसे करोगे, बाय वे ऑफ एनालिटिकल. मतलब reorganizing a possibility, adding the collection of ideas, information that you have organized into the suitable structure, such as the category of group, parts, relationship, कोई भी कैटेगरी, क्योंकि आप एक साथ नहीं ले सकते. इफ यू हैव अ डेटा, हैव अ बिग डेटा, if you have a big data for your PhD thesis or maybe your dissertation, can you analyze everything in one thing apart? No. एक साथ पूरा ले सकते हो, एनालाइज कर सकते हो क्या? No. So always you think that कि whenever you analyze something for your writing spirit, that means कि you have to segregate. You have to segregate your data in different kind of groups according to your topic, according to your objectives, कि कैसे ग्रुप होना चाहिए. तो उसके हिसाब से ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. एनालिटिकल अप्रोच होना भी जरूरी है व्हाइल राइटिंग एकेडमिकली. एकेडमिकल राइटिंग में आपको एनालिटिकल सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप
कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाओगे। अगर जैसा है वैसा मैंने उतार के रख लिया तो इट इज एकेडमिक राइटिंग ऑफ व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, आई गिविंग यू एग्जाम्पल ऑल्सो, आई हैव अ 20, मेरे पास 20 बच्चों के नाम है, 20 बच्चों के 10 सब्जेक्ट्स में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स में उनको मार्क्स मिले वो है, तो आई हैव ये सारे 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स विद 10 बच्चों के मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, जब ये मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, जब ये मेरे पास अवेलेबल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये अवेलेबल होने के बाद में मैं क्या करती हूँ, वैसे का वैसे उतार लेती हूँ क्या। कैन बी डिस्क्राइब, आई नरेट दैट, मैंने डिस्क्राइब तो पहले बताया आपको, जो आई डिस्क्राइब दैट कि आई हैव 10 नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10 स्टूडेंट, आई हैव इवन आई हैव दैट 20 सब्जेक्ट्स। I mean, should I mention that things? No, I had to segregate because 10 स्टूडेंट में से कितने मेल है कितने फीमेल है, उनमें से इंग्लिश के ग्रुप में कितना मिला है, मैथमेटिक्स में कितना मिला है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में कितना मिला है, अलग अलग ग्रुप में कितना मिला है, तो आई शुड हैव टू एनालाइज। So this analysis is your part of your academical writing. Okay. Next is perception. Definitely आपको ये देखना पड़ेगा कि whenever you write something, it should very point to the point. Should not be आज मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आज गर्म है, तो ये नहीं बोल सकती कि कल परसों ठंडा था, फिर बारिश हुई थी, उसके बाद बादल आए थे, एंड देन फिर आज स्टिल वी हैव लिटरेचर पेपर। लिटरेचर लोगों के पास में अगर एक चीज़ बोलना तो उनके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है बोलने के लिए। वन वी आर टॉकिंग अबाउट academic writing, so there is no such place of your imagination where it should be point to point. It should be very persuasive कि आपका कितना पॉइंट आपने मेंशन किया है, कितना इन्वेस्टिगेशन आया है आपका, कितने पॉइंट्स आपके पास है, it should be very specified. It should not be is your imagination. It should be आपका पॉइंट, व्यू पॉइंट कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या कन्विंस करना चाहते हो आपके रिसर्च में, आपके राइटिंग्स में, आपके रीडर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। Then is critical. I told you earlier कि academic writing is a critical writing. It is not a creative writing because creativity is a different thing. Because जोशी सर अगर होगे, जोशी सर आई नो कि दिस इज वन ऑफ द क्या बोलूँ सर का एकदम फेवरेट टॉपिक में से एक है क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व विद ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो जाती है, क्वेश्चन में बनवाया जाता है बट राइटिंग इन अ सिंपल वे, कि आपके पास्ट आपके एक्सपीरियंस के आपके इन्वेस्टिगेशन से यू आर आस्किंग सम काइंड ऑफ क्रिटिकल स्टेटमेंट्स और मे बी अ पैराग्राफ, देन द रीडर शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स कि सच ये भी है। So this kind of critical thinking should be appear in your research paper. Critical writing involve in your point of view, but also that कि आपने किसी चीज के लिए उसको इन्वेस्टिगेट किया। इट इज नॉट कि आप क्या चीजें कर रहे हो, आप जो चीजें बोलना चाहते हो, इन्वॉल्व करना चाहते हो योर पॉइंट ऑफ व्यू, पर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज सम ऑफ योर बैक एविडेंट, सम ऑफ योर पास्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके ओके, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल whole concept of academic writing. I just have a brief knowledge or introduction to the academic writing because I have been tell you कि academic writing क्या होती है, उसके कौन से की पॉइंट्स अवेलेबल है, कि टेंडेंट कौन से और कौन से टाइप में आप राइटिंग कर सकते हैं। ये तीनों चारों चीज मैंने बताया, तो आई होप कि all you have clear your mind कि what is academic writing is. If they आपके अगर एग्जाम में भी अगर आता है तो इट माइट बी वेरी क्लियर टू यू कि किस तरह से आपको आंसर्स वहाँ लिखने हैं और किस तरह के आपके चीज़ें हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। तो इफ एनी क्वेश्चन फॉर यू, तो यस इट इज ओपन फॉर यू ऑल। सर आई बीन स्टॉप Thank you so much, ma'am. If anyone wants to ask questions, then you can ask. Okay. No one has asked. So I am asking a question to everyone. Should shall I ask a question to everyone? Yes, ma'am. You giving your answers in your chat box. Everyone having the chat box, yes or no? Okay. Yes. So said Yes. yes in your chat box. If it is yes, so just give the answer is yes on your chat box.
This chat box में yes or no type कीजिए, whether yes or no. Yes, why is yes, no for n. Okay. Will it be? I'm just asking a simple question. What is academic writing? Is it formal or informal? Write in your chart. It is formal or informal? Write in the chat box. Academic writing is a formal or informal? Write in your chart box. Okay. Okay, it is a formal one. It is not informal. Thank you so much, Vaibhav sir. If anyone have a question related to academic writing, definitely ask a question for a link. So I'm here to give you answers. Yes. Vaibhav sir, it's over to you. Thank you so much, ma'am. Ma'am has given lecture on academic writings, where she defines the academic writing. She talks how does academic writing look like, types of academic writing, and key tenets of academic writings. So thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Really, we learned a lot from this. Thank you so much. Now I hand over this session to Pradeep Shende for vote of thanks. Good afternoon to each one of you present here. I am Pradeep Shende, MA, first year, PGTD of English, Gondwan University, Gadchiroli. We have reached to end of today's session for NOS Series 3.0 2023. First off, I would like to express my gratitude to our chairperson of the program, Dr. Vivek Joshi sir, organized a very beautiful and effective session for us. I'm extremely thankful to today's chief guest and speaker, Dr. Priya Gedam, ma'am, PGTD of Commerce, Gondwana University, Gadchiroli, for giving us a very thoughtful and enlightening guidance and academic writing skill. Dr. Priya Gedam, ma'am, have a very good information about academic writing skill. She defined the academic writing skill. She talks how does academic writing look like and some types of academic writing. So thank you so much, ma'am, for the wonderful session. I would like to extend my gratitude to the PGD of English faculty, organizing team of NOS Series 3.0, Dr. Vaibhav Masram sir, Dr. Shilpa Athawade ma'am, Dr. Pramod Javre sir, for wonderful arrangement. I would like to thank all the participants of today's sixth session for attending and your cooperation and being the major part to make this session successful. I would also thank to today's host Prabhuji Veskare for amazingly hosting today's session. I would also thank to giving me this opportunity of vote of thanks. Last but not the least, I appreciate and thank everyone for your participate to make this session successful. And here I declare the session is over. Thank you so much, everyone.